Let us have understanding of the next theory called Linter model. Professor John Linter had introduced this dividend policy theory. Friends, I give you a small example, say to explain this dividend policy theory. Let us say that year 2015, 16, 17, 18, 19. Suppose ये 5 साल हम लोग लेते हैं. Randomly I am taking. Earning per share of the company is 20, 30, 50, 40, and let us say again 50. Suppose company का policy है to pay the dividend, let us say equal to 30% of earning. So 20 into 0.3 यानी 6 रुपए, 30 into 0.3 यानी 9 रुपए, 50 into 0.3 that comes to 15, 40 into 0.3 that comes to 12, 50 into 0.3 that comes to 15. This is the way the dividend is paid. उसकी जगह suppose कि dividend is paid like this. An amount of dividend per share is 5, 6, 7, 7, 8. तो देखो ये हो गया A, ये हो गया B. इन दोनों में से कौन से डिविडेंड पॉलिसी थियरी में ज्यादा डिविडेंड पे हुआ है, A या B? लिखो चैट बॉक्स में. We understand that say A dividend policy theory में ज्यादा डिविडेंड पे हुआ है. It is 6 plus 9 plus 15 plus 12 plus 15. So total हमने 57 रुपीज का डिविडेंड पे किया है. जबकि B डिविडेंड पॉलिसी में कंपैरेटिवली कम डिविडेंड पे हुआ है. 5 plus 6 plus 7 plus 7 plus 8 यानी कितना 33 का. In spite of making less payment of the dividend in case of B, Linter model का कहना ऐसा है, investors will be more happy with the B instead of A. Linter model का कहना ऐसा है that say investors do not like a dividend payment wherein the amount of the dividend per share is say fluctuating. Investors do not feel that confidence, if at all, so the dividend per share is going like this. Instead of that, so the investors want the dividend per share say in this way. In a way that say every year either the dividend per share is maintained or dividend per share is increasing. Dividend per share कभी भी गिरना नहीं चाहिए. This is for the kind of contention that they have. So as per as per Linter model, so the amount of the dividend per share say is important instead of dividend payout ratio. जब आप dividend payout ratio constant रखते हो तो क्या होता है friends? तो ऐसा होता है that say with the fluctuation in the earning, the dividend per share also fluctuates. And in that case, the investors do not feel that satisfaction as what they have in case of the amount of dividend per share is increasing or at least it is remaining the same. So continuing with this further, understand carefully. उनका कहना ऐसा है कि suppose in any of the year the earning per share is falling down. Even in that case, you try to maintain the previous year's dividend in this year out of retained earning if possible. इसलिए जब भी हम लोग डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग इतना डिविडेंड इस साल पे करें जो हम लोग फ्यूचर में मेंटेन कर पाए. क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी डिविडेंड इस साल पे कर रहे हैं, दैट इज द मिनिमम डिविडेंड टू बी पेड इन द सब्सिक्वेंट इयर्स. कभी भी हम लोग वो डिविडेंड पर शेयर रिड्यूस हो ऐसा नहीं होने देंगे. दैट इज प्रेफरेबली वी शुड डू लाइक दैट. दिस इज व्हाट द थियरी सेज. सपोज फॉर एग्जांपल आपको 2020 में आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से आपका ईपीएस 100 रुपए हो गया. तो उस केस में व्हाट अमाउंट ऑफ द डिविडेंड दैट यू शुड पे इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. क्यों?
क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बहुत हाई डिविडेंड पे कर दिया है, then in that case it may happen that subsequently you may not be able to maintain that. Investors are not concerned कि आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रखते हो कि नहीं. इन्वेस्टर्स आर कंसर्न कि आप पिछले साल के जितना एटलीस्ट डिविडेंड पे करते हो और नहीं. दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड. Add-on heading Linter model. उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर जॉन लिंटनर had introduced this theory in 1956. It was introduced after number of interviews with corporate managers. Full stop.